Hello friends, this is Shivam Dubey from English Kingdom, Katra Prayagraj. Welcome to the class. We are just commencing a free class batch for PGT KVS, and that will be a regular class actually in the morning at 7. So from 7 to 8, almost 1 hour daily, we will go with the syllabus of KVS PGT, and there I would explain you the course that have been prescribed you from literature of NCERT book. You must buy this book, and there are some grammar points that I would like to discuss, and there would be some practices as well, no doubt in the early session. This practice is not going to be possible, but very soon we will go and will start a kind of Sunday test that will be held on English Kingdom app. So those who will be interested to appear this test, they may download English Kingdom app from Play Store and should appear in Sunday's test. And those who are actually interested to be the part of this regular class of PGT KVS, they can join our group on Telegram. That's a free group actually, and for that you have simply to message us on our contact number 9369542072. That's our actually Telegram number as well, and there you just mention your name and your course name, and we will add you in the group, where you will simply find the link of the class. Otherwise it's a free of cost, so you will find simply the link of the class on YouTube very easily. So this will be regular class, and you guys can be the part of this class, where I will explain the text, I will explain the poem, I will go with the supplementary readers that would be, and yes, a little bit description of the biography of the writers. So as from the very topic of the day, you may have seen that we are just going to start Khushwant Singh with his short story, The Portrait of a Lady. So that's the Khushwant Singh, The Portrait of Lady, for the first day's class. Okay, it's The Portrait of Lady by Khushwant Singh. Well, you see, the class will be bilingual, means we'll go through Hindi and English both. And as I told you that in the class, in the early stages, we are not able to go through the question session. Later on, we'll move with the question session as well. And that would be for 10 to 15 minutes daily, and we'll put you question from the lessons I have taught you formerly. And well, the focus is on your English syllabus. As you see, we are not going to run the first part of this course that is actually related to various subjects, and honestly speaking, that's not possible for me. So easily we will go with the English syllabus, and that we will complete, and the target is almost 3 months, as we have guessed or expecting that the exams will be held by the end of March or April. So accordingly we will complete this syllabus, and yes, in a 3 month we have to complete this whole syllabus. And as you see, the today's class is based on Khushwant Singh. Before we start the Portrait of Lady with its text,
we have to go with some of the elements related to the biography of Khushwant Singh. See, the name of Khushwant Singh was earlier named to be Khushal Singh. Khushal Singh was his early name. And later on, he was called with his pet name, Shali. You can say Shali, that was a pet name of Khushwant Singh. Khushal Singh, how he converted himself to be Khushwant Singh is actually his school story. You remember when he was schooled, actually got admission in modern school, New Delhi. Modern school, New Delhi. That was his early education. There students started making his name as a joke. Let me recite the line. The students used to call Shali Shuli Bagdi Muli. Means that was a kind of irritating statement from the classmates of Khushwant Singh. They used to call him Shali Shuli Bagdi Muli. You can understand that Shali Shuli was like, a rough name. Most of the time we rhyme together the names like that. And Bagdi Muli, Bag is garden and Muli, radish. So students started actually teasing him, irritating him with this kind of name. So later on he decided to go with his own manufactured name. And there is a statement from him. He said that it's a self-manufactured and meaningless. Is the name, this was self-manufactured. Name by Khushwant Singh. This was not name given by anybody else. He himself named himself to be Khushwant Singh, and the statement is meaningless. Why meaningless? Because he thought before him there was nobody named to be Khushwant Singh. But later on he came to know that there was an Indian physician whose name was Khushwant Singh. Means some meaning of the name come to him. And this is how he comes to, why he got this name, or what was the reason behind himself naming, is the name of his elder brother, Bhagwant Singh. Bhagwant Singh was elder brother of Khushwant Singh. So most of the time you see in Indian family, Sonu is followed by Monu. Okay, Rakesh is followed by Mukesh. Exactly, Suresh, Dinesh, anybody. Most of the time you see that the name of boys in a family, or you will see that the family names like Himanshu, Divyanshu, Shivanshu, Subhanshu, Sudhanshu, they all are the Shu. Okay, so what I want to tell you that most of the time we have the rhyming name in the families of the girls or the boys. They are, if there is somebody like Sona as a girl, there would be Mona, you will find. So why this is, I don't know, but this is what the spirit that Khushwant Singh went with the name of Khushwant Singh, because his elder brother was
Bhagwant Singh. So that was the real reason. He was son of Sir Shobha Singh. Sir Shobha Singh was his father, and the family had its long established recognition in British rule. He was particularly touched by Lakshmi Devi. Lakshmi Devi. You see, Lakshmi Devi was his grandmother. Whose character he has portrayed in the story, a portrait of a lady. This lady is Lakshmi Devi, the grandmother of the novelist and the story writer. He could, as I told you, start his early education. Good morning to everyone. Okay, Banita. Okay, early education, as I told you, started at modern school, New Delhi, and then he was from Delhi. He was entered to the next, and that he is intermediated. And he intermediated, well, modern school, well, somewhere we mentioned it. Okay, from 1920 to 1930. 1920 to 1930, he spent time at modern school New Delhi. Then he was entered to the next, and that was St. Stephen's College in Delhi. St. Stephen's College in Delhi, and there he graduated. Actually, that was intermediate of arts, the degree he received. Intermediate of arts, that was the degree he received between 1930 to 1932. 1930 to 1932, 3 years spent there and received intermediate degree. He received his higher education, and that he got himself enrolled for higher in Government College, Lahore. Government College, Lahore, and there he graduated. Actually, that was a poor performance, and in the third class degree he passed in 1934. It means from 1932 to 1934. 3 years. He graduated, and in the third class he received his graduation. Graduated in third class degree. Well, the man was born on 2nd February. Khushwant Singh was born on 2nd February in 1915. Breath is last on 20th March 2014. 20th March 2014, he breath is last. Remember, the date of his birth is not very sure.
It's okay, Ashish. You may contact us. We are just going to commence a new batch for UP TGT PGT today. And so you may receive our contact number and call us. We will give you better information there. Thank you. And as I told you that Khushwant Singh's date of birth is not very sure. According to his grandmother, he was born in August. Grandmother Lakshmi Devi told that he was born in August. But as you see, in older days, the record of the name and especially name of month was not very clear because the son were enrolled in a college. Possibly this exam will be in May or June, Ashish. Okay, both batches we are running, you may call us. Okay, so Khushwant Singh, who was actually born according to Lakshmi Devi, born in August 1915. Later on, he was given this 2nd February 1915, according to his own father, as he was enrolled with this date of birth in the school. And here, this is the time when he breathes his last. Under his name, there are many, you can say, honors. The first one that we go with was Padma Bhushan. Padma Bhushan. That received in 1974. Padma Bhushan he received in 1974. And there had been some problem, especially in 1984, against the Operating Blue Star. 1984, he returned in 1984. The reason was, according to Operating Blue Star, there was a raid by Indian Army, and that was at Amritsar. This could hurt Khushwant Singh a lot, and the result was he decided to return this honor that he received in 1974. So returned in 1984 as a sign of his protest against the Operating Blue Star. The next he received was again in 2007, he was given Padma Bhushan. Padma Vibhushan. That he received in 2007. And that's the second highest civilian award in India that he received. His experience of Indian independence could be portrayed in one of his novel, that's Train to Pakistan, that was later filmed as well.
That has been very famous work of his. And the next one, the portrait of lady, is here in our course that we're going to study. Along with that, he received Sahitya Akademi Fellowship in 2010. Sahitya Akademi Fellowship. In 2010, he received the Sahitya Akademi Fellowship. He received the Grove Press Award for Best Fiction. The Grove Press Award for Fiction. He received it. He received Punjab Ratan Award from the government of Punjab in 2006. Punjab Ratan Award. that he received from the government of Punjab. He received Lifetime Achievement Award by Tata Literature Live in 2013. Lifetime Achievement Award. Lifetime Achievement Award in 2013 he received. That was conferred to him by Tata Literature Live in 2013. Okay, well, the man who was there, he could write his memories on his grandmother, Lakshmi Devi, and that becomes the short story of 2009. The Portrait of Lady was published in 2009. The publication was done by Penguin Books India. Published by Penguin Books India in 2009. Okay, as I told you that the book is autobiographical, the story is autobiographical. And especially from the childhood of the author onward, he discusses how he spent his time with Lakshmi Devi, as I told you earlier.
as the grandmother of his, and how she became the inspiration for the writer, and later on she could inspire him to write the beautiful story, The Portrait of a Lady. We cannot forget that the title is very much similar to the two great writers, Portrait of Lady by T.S. Eliot. It's a poem. That's by T.S. Eliot. Was actually a poem. And there is the next one following, and that was James, and his work, The Portrait of Lady, was a novel. Yeah. Was a work of Henry James, and it was a novel. So you see, this Portrait of Lady in our course is a story, short story. This one from T.S. Eliot was a poem, as you see, and this one, The Portrait of a Lady, was a novel by Henry James. Yeah, exactly. This novel, The Portrait of Lady, first used the literary device stream of consciousness. Though it was coined by William James, the term stream of consciousness was coined by William James in his book, The Principles of Psychology. But you know, Principles of Psychology was a psychological work. That was not the fictional work, that was not the work of literature. Instead, it was a principle of psychology as a scientific work, or you can say medical science work. And this is why we don't include it. But yes, definitely, that is a book, The Principles of Psychology, where William James introduced the term, introduced the doctrine, I must say, not only term, the stream of consciousness. Later on, this was first used by Henry James in his novel, The Portrait of a Lady. Okay, so three works you will receive, one from T.S. Eliot with the same title, the next one is from Henry James, and the right that we're going to learn here, that we're going to study here, is from Khushwant Singh. And there's a difference, as I told you. The work of Khushwant Singh is an autobiographical story. But when you come to T.S. Eliot's Portrait of Lady, is not an autobiographical work. Simply, it's a work of fiction that he could form the life of lady in three parts, who is in love with someone younger to her, and by the end of the poem we come to see that she was deserted by the young lover and she willed to let him go. And the next one is here, The Portrait of Lady, and that shows actually the cultural conflict, European culture and American culture. The two cultures were placed together in the novel by Henry James, and through the lady, the two cultures have been put together and the conflict of the two cultures have been seen. Once again, this was again a fictional work. This had been a fictional work. But when we come to this Portrait of a Lady by Khushwant Singh, we find that it's autobiographical, and as we see that it's Lakshmi Devi, his grandmother, who's going to be the source for this short story. Okay, as I earlier told you that the story is, good morning to every one of you. The story is very short and a very interesting one as well. One thing
that we want to see or we want to know is how our elders mold themselves, change themselves for our sake. कभी अगर हम लोग ध्यान दें तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम तो उस टाइम में पैदा ही होते हैं जहां पर लॉट्स ऑफ चेंजेस आर देयर, तो हम कभी अपने बुजुर्गों के अनुसार अपने आप को मोल्ड नहीं करते, शायद हम कभी एडजस्ट भी नहीं करते, बट एवर वी थिंक तो आवर एल्डर्स कॉप अप विद द टाइम वी लिव इन. वो टाइम उनका नहीं होता है, लेकिन जब वो देखते हैं कि समय के साथ अगली जनरेशन या यंग जनरेशन जो जा रही है, तो वो इससे हिचकिचाते नहीं हैं, बल्कि वो हमारे साथ में खड़े होते हैं, हमको सपोर्ट कर रहे होते हैं. एक्चुअली दिस इज द पॉइंट दैट दिस होल स्टोरी ऑफ द लेडी लक्ष्मी देवी, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी ऑफ खुशवंत सिंह, is foretelling us, explaining us and narrating us how the elders. एक बात और जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो है टच ऑफ पंजाब और टच ऑफ अर्ली इंडिपेंडेंट इंडिया, जहां एक बड़े घर के लड़के को भी किस तरह से एजुकेशन लेना होता था, किस तरह से उसका रिलेशन शुरुआत में अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहा. पेरेंट्स जब जॉब में होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रियरिंग अप अ यंग जनरेशन गोज टू द एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, स्पेशली ओल्डर जनरेशन यू में से. और उसी का डिस्क्रिप्शन है खुशवंत सिंह अपने आप को यहां पर रखते हैं. और एक बात जो बाय द एंड ऑफ द स्टोरी हम लोग लर्न करते हैं इज रिलेशन, how we build our relation. This relation can be felt even with the non-human voice speaking birds. By the end of this story हमें ये मालूम चलेगा कि जब ग्रैंड मदर दुनिया को अलविदा कहती हैं तो उनको होमेज पे करने के लिए केवल ह्यूमन बीइंग नहीं आते हैं, बल्कि वो बर्ड्स भी आती हैं जिन्हें वो थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ा टुकड़ा करके रोटियां खिलाया करती थी. आई समटाइम्स थिंक हाउ ग्रेटफुल वी आर दैट वी गॉट अ चांस टू लिव विद आवर एल्डर्स. और कभी कभी ये भी सोचता हूं कि कैसे उन्होंने अपने आप को टाइम के साथ एडजस्ट किया. यू नो, इन आवर लाइफ सच में अगर देखा जाए तो हमारे पास खुद के लिए समय नहीं होता है. हम बड़े अजीब सिचुएशन में जी रहे होते हैं, जिनके लिए जी रहे होते हैं उनके लिए ही समय नहीं होता है. चाहे हम अपने लिए जी रहे हैं तो अपने लिए भी समय नहीं है, और अपनों के लिए जी रहे हैं तो अपनों के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि उनको अच्छा देने के चक्कर में, खुद को अच्छा देने के चक्कर में हम खुद को ही कुछ नहीं दे पाते हैं और अपनों को ही कुछ नहीं दे पाते हैं. बस हमारी कोशिशें होती हैं, हमारी एफर्ट्स होती हैं कि एक दिन हम ऐसा करेंगे, एक दिन हम ऐसा करेंगे, एंड डेफिनेटली दैट्स अ डिमांड ऑफ द टाइम. वी कैन नॉट गो बैक. जैसा वक्त की जरूरत होती है वैसा हम लोग करते हैं, वापस तो जा नहीं सकते हैं. सो सिंपली वन थिंग इज देयर, वी ट्राई टू लर्न द थिंग्स फ्रॉम द गॉड हैज गिफ्टेड अस एंड द गॉड हैज foretold us to be there on this earth and lead the life of soothing spirits. बट जब हम बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से खुशवंत सिंह की लाइफ में उनकी ग्रैंडमदर का रोल होता है, खुशवंत सिंह ने सारी चीजों को पोर्ट्रेट किया है. जब उन्हें लगता है कि हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ेगा, जब उन्हें लगता है कि शहर में जाना पड़ेगा, तो ग्रैंड मदर कैसे उस टाइम को एडजस्ट करती हैं. शहर में जाने के बाद बच्चे का रोल जो वो कर रही थी वो फ्री हो जाती हैं. उसके बाद बच्चे के लिए उनके पास तो टाइम होता है, लेकिन बच्चे के पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि उसको जाने के लिए स्कूल बस आ गई, इंग्लिश बुक्स पढ़ने लगी. कुछ ऐतराज भी थे, ये नहीं पढ़ना चाहिए, वो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आफ्टर ऑल
वो उसको पढ़ते रहे। फाइनली ग्रैंड मदर ने समझ लिया कि अब उन्हें खुशवंत को अपने अनुसार नहीं लेके चलना है, उसे समय के अनुसार चलना है। हायर एजुकेशन के लिए जाना हुआ तो शी अकम्पनीड हिम टू द स्टेशन। और राइटर को खुद भी उम्मीद नहीं था कि जब वो 5 साल बाद वापस आएंगे तो पता नहीं अपनी ग्रैंड मदर को वो देख पाएंगे कि नहीं। बट ही फेल्ड, वो गलत थे। जब वो वापस आते हैं तो ही सा दैट द ग्रैंड मदर वाज एट द स्टेशन टू रिसीव हिम। और घर आने के बाद वो खुशियां मनाती है, दो जस्ट आफ्टर सम टाइम शी कुड ब्रेथ हर लास्ट। और जब वो नहीं थे तो वो चिड़ियों से उनकी बड़ी दोस्ती हो गई थी। शी यूज्ड टू हैव दी पीसेस ऑफ ब्रेड्स एंड यूज्ड टू फीड द बर्ड्स। ऐसी दोस्ती हो गई थी, कुछ चिड़िया उनके सर पे आके बैठ जाती थी, कुछ उनके कंधे पर बैठ जाएं, कुछ उनके पैर पर बैठ जाएं। उनको उड़ाती नहीं थी, उनके साथ ही रहती थी। एंड व्हेन शी ब्रेथ हर लास्ट, फिर से वो चिड़ियों का झुंड आता है उनके घर पर। और नरेटर की मदर सोचती हैं कि चिड़िया ब्रेड खाने के लिए आई है, ये टाइम है ब्रेड खाने का। तो वो घर के अंदर जाती हैं, एक तरफ डेड बॉडी ऑफ ग्रैंड मदर है, दूसरी तरफ वो जाती हैं ब्रेड के पीसेस लाती हैं और फैला देती हैं कि वो खा लें। बट नॉट अ सिंगल पीस ऑफ द ब्रेड वॉज टच्ड बाई एनी बर्ड, दे जस्ट वर साइलेंट एज दे केम टू पे होमेज टू दिस ग्रेट लेडी। और जब ग्रेट लेडी की डेड बॉडी को लोग लेकर के चल दिए अपने कंधे पर, तो सारी बर्ड्स बिना किसी एक भी पीस को टच किए उस जगह से उड़ के चली जाती हैं। दिस इज हाउ दे कुड शो व्हाट ह्यूमन एंड अदर बीइंग्स मीन टू रिलेशन। अगर हम इंसान को समझते हैं तो इंसान को तो हम बोल लेते हैं कि भाई किसी के घर में अगर इस तरह की सिचुएशन हो गई तो घर वाले इस होमेज को दिखाने के लिए कि हम आपके लिए दुखी हैं, किसी भी तरह की सुख सुविधा से अपने आप को दूर कर लेते हैं। ना अच्छा खाना खाएंगे, ना अच्छा लाइफ स्टाइल जिएंगे, वो अफसोस जाहिर करने के लिए कि आप हमारी दुनिया में नहीं हैं, आपकी रूह इस समय समस्या में है, मुसीबत में है, जैसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में एक्सप्लेन्ड है। तो जब तक आप समस्या में हैं तब तक हम भोजन ठीक कैसे कर सकते हैं, हम अच्छे वस्त्र कैसे पहन सकते हैं, हम अच्छे आराम से कैसे रह सकते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग वी डू, ये हम इंसान कर लेते हैं। लेकिन ये बर्ड्स भी इस बात को समझ गई दैट इज समथिंग एबनॉर्मल इन द स्टोरी। ये स्टोरी की सबसे अहम, सबसे अलग बात है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं विद द फर्स्ट ऑफ द पैराग्राफ। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. अब आप समझते हैं कि जितने लोग, हम सारे लोग जब पैदा होते हैं तब तक आमतौर पर हमारी जो ग्रैंड मदर होती हैं वो बूढ़ी हो गई होती हैं। हमें अपनी ग्रैंड मदर कभी युवा दिखी ही नहीं होती हैं। तो हमारे दिमाग में क्या चलता है जब तक हम छोटे रहते हैं कि हमारी जो ग्रैंड मदर है वो हमेशा से ही बूढ़ी थी। गुड मॉर्निंग लता, ऐसा लगता था हमेशा से ही बूढ़ी थी। कोई अगर बोलता भी है ना कि नहीं नहीं तुम्हारी दादी कभी मतलब थी, तो ऐसा लगता है नहीं 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 ये तो सिर्फ फिक्शन है। और दादी थी तो दादी को हुआ क्या, ये झुकी हुई बॉडी, आंखों चेहरों पर इतने, चेहरे पर इतना ढेर सारी झुर्रियां, है ना, और ये कांपते हुए हाथ, नहीं 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 झूठ बोला जा रहा है, ऐसा नहीं, वो बचपन में लगता ही नहीं। तो वो कह रहे हैं माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड फीमेल। हमारी माँ ग्रैंड मदर बाकी लोगों की ग्रैंड मदर की तरह, सबकी ग्रैंड मदर तो ओल्ड वीमेन ही होती हैं। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years। 20 साल से मैं उनको देख रहा हूं और 20 साल से वो ओल्ड है। 20 साल से उनके चेहरे पर रिंकल्स हैं, झुर्रियां हैं। मतलब उनमें कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि उनका चेहरा बिना झुर्रियों का है, या कभी मैंने ऐसा नहीं देखा उनको 20 साल से कि वो युवा थी। People said she had once been young and pretty। लेकिन लोग कहते हैं कि कभी मेरी दादी जवान भी थी और खूबसूरत भी थी।
एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, और यहां तक लोग कहते हैं कि हमारे दादी के पति भी थे, हमने तो नहीं देखा कभी। अब ये एक आपका समझ ना कि नादान बच्चा है, छोटा बच्चा होता, उसे क्या मालूम कि अगर दादा नहीं थे तो फिर हम कहां से आए दुनिया में। भाई दादा के होने, दादी के होने की वजह से हमारे पापा आए और उनके होने की वजह से हम आए। तो चूंकि दादा को कभी देखा नहीं था तो उनको लगता था ना दादी हमेशा से अकेली ही थी। ये तो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं थोड़े थोड़े, तो पड़ोस वाले हो सकता है अंकल जिनका कुछ रहा होगा दादी से, तो कहेंगे नहीं तुम्हारी दादी थी, मतलब प्रेटी थी, खूबसूरत थी। तो होता ना सबकी अपनी लाइफ। अब पुराने जमाने में लोग बोलते नहीं थे, आजकल तो हमें किसी से फीलिंग हुआ तो हम लोग बोल दिया करते, पुराने जमाने नहीं बोलते थे, ठीक है, जो है वो दिल में ही रह जाता था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। ये लोग कहते जरूर थे कि मेरी दादी खूबसूरत थी, मेरी दादी यंग थी, मेरी दादी के हस्बैंड भी थे। हार्ड टू बिलीव। लेकिन इस बात को बिलीव करना, इस बात पर यकीन करना, इस पर भरोसा करना बहुत ही हार्ड था, बड़ा ही मुश्किल था। यकीन नहीं होता था कि एक्चुअल में मेरे दादी के पास हस्बैंड भी थे। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब मैंने देखा मेरा जो ड्राइंग रूम है उसके ऊपर हमारे दादाजी की एक तस्वीर लटकी पड़ी हुई है। He wore a big turban and loose fitting clothes. वो एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखे हुए हैं और उनके क्लॉथ्स जो है बड़े ढीले ढाले हैं, लूज फिटिंग क्लॉथ्स। His long white beard covered the best part of his chest. और लंबी लंबी उनकी दाढ़ी है और इतनी लंबी है कि चेस्ट का ज्यादातर हिस्सा उसने खुद कवर कर रखा हुआ है। He looked at least 100 year old. देखकर उनको लगता है कम से कम सैकड़ा तो मार ही दिया इन्होंने, सेंचुरी तो लगाई दी होगी। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो उस तरह के आदमी लगते तो नहीं है देखने में कि जिनके पास बीवी रही होगी या जिनके पास बच्चे रहेंगे, मतलब साधु संत टाइप के लगते हैं देख करके उनको। भाई इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, सन्यासियों साधुओं के टाइप में वेश, एकदम ढीला ढाला कुर्ता पहने हुए, तो देखकर नहीं लगता कि यार इस आदमी के मन में भी कभी रोमांस आया होगा। अरे कभी नहीं आया होगा। छोटे बच्चों को लग रहा है कि नहीं दादा हमारे ना बड़े पुजारी टाइप के आदमी थे। फिर वही बात है, अगर दादा पुजारी थे तो हम यहां क्या कर रहे हैं, कैसे आए? लेकिन उस छोटे बच्चे को कैसे समझाएंगे आप? नहीं समझा पाएंगे ना। दैट्स द पॉइंट। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. हाँ, बस इतना लगता था कि उनके पास ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। मतलब वाइफ नहीं होगी, ग्रैंड चिल्ड्रन जरूर होगी, मतलब बहू जरूर रही होगी। अब इस छोटे बच्चे को कौन बताए कि वाइफ रही होंगी तभी तो पापा आए होंगे, पापा आए होंगे शादी की होंगी तब उनकी बहू रही होंगी, बहू रही होंगी तब ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे, है ना। लेकिन बच्चे के अपने इमेजिनेशन क्या लगता कि दादा इतने सीधे साधे हैं कि इनके पास ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन नन्हे मुन्ने सब होंगे, बस वाइफ नहीं होगी, उनके अपने बच्चे नहीं होंगे। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, जहां तक मेरी दादी की बात थी, लोग कहते थे कि कभी यंग थी, कभी खूबसूरत थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये विचार अपने आप में एक आंदोलन था। आंदोलन मतलब समझ रहे हैं आप? आप दो पॉइंट को सामने रख लीजिए, एक जो हमने देखा है, एक जो लोगों ने बताया है। हमने क्या देखा है? हमारी दादी कभी झुर्रियों से फ्री हुई नहीं। हमने क्या देखा है? हमारी दादी कभी झुकी हुई बॉडी से ऊपर उठी नहीं। हमने क्या देखा है? हमारी दादी सीधी सादी पूजा पाठ करती, माला फेरती हुई। लोग क्या बताते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम्हारी दादी कभी खूबसूरत थी, अरे बड़ी युवा हुआ करती थी, क्या बताएं कैसी थी, है ना। अब एक और लोग कहते हैं कि वो युवा थी, एक और हमने देखा है कि उनमें युवा कभीपन दिखाई नहीं, युवापन। दोनों थॉट्स कैसे हैं? एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं, इसलिए दिमाग में क्या चल रहा है? रिवोल्ट। अब जो हमने देखा है और जो हमको बताया गया है, उस दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है।
कौन सी बात माने और कौन सी बात नहीं माने समझ में नहीं आ रहा है. रिवोल्टिंग. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. अक्सर करके वो हमें उन गेम्स के बारे में बताती थी, उन खेलों के बारे में बताती थी जिसको वो बचपन में खेला करती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. अब वो बताती थी कि मैं खेलती थी, तो मैं कभी कभी सोचता था कि यार ये बुढ़िया चल नहीं पा रही है और बोलती खेलती थी. तो दादी की बात भी सुनकर कभी कभी इन्हें लगता था कि ये भी सनक गई है, झूठ बोल रही है, ठीक से चला तो जा नहीं रहा, डंडी पकड़ के घूम रही हो. और खेलती थी, पता नहीं कौन कौन से खेल का नाम ले लेती थी. और उसको सुन के लगता था नहीं 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 ये अनडिग्निफाइड है. दादी के स्वास्थ्य के अनुसार ऐसा खेल, ये लंगड़ी खेलती थी, ये खुद लंगड़ी हो गई है. मतलब यकीन नहीं होता था. दादी बोलती थी तो भी नहीं यकीन होता था. शी ऑफन टोल्ड अस द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. उनकी ओर से अगर देखा जाए तो ये सारे गेम देखना, सुनना, बोलना अपने आप में अनडिग्निफाइड थे, अपने आप में अशोभनीय थे. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस. और जब दादी ऐसी बातें बताती थी कि हम भी ये खेलते थे, हम भी वो खेलते थे, हम कैसे सुनते थे? जैसे दादी प्रॉफिट्स की बातें बताती थी ना, बड़े बड़े संत महात्माओं की, भविष्य वक्ताओं की बातें बताती थी, उनकी कहानियां बताती थी, तो हम मान लेते थे कहानी में ऐसा होता था. वैसे जब दादी बता रही कि हम खेलते थे तो हम उसको भी एक कहानी ही मानते थे. मतलब हमें नहीं लगा कभी कि हमारी दादी भी ये गेम खेली होगी, कभी नहीं लगा कि ये दादी ने किया होगा. She had always been short, fat and slightly bent. जब से मैंने देखा है मेरी दादी थोड़ी कम हाइट की है, शॉर्ट, फैट है, थोड़ी मोटी हो गई है, एंड बेंट, स्लाइटली बेंट, हल्की सी उनकी बॉडी झुक गई है. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स. उनके चेहरे पर तो रिंकल्स का क्रिस क्रॉस बना हुआ है, चौराहा बना होता है, जिधर से भी निकलिए हर जगह आपको चौराहा मिलना है. मतलब इतने रिंकल्स उनके फेस पर हमने देखे हैं कि कहीं पर ऐसा लगा ही नहीं कि ये फेस बिना रिंकल्स का भी है. तो हमें तो क्रिस क्रॉस, इधर से जाओ, उधर से जाओ, इधर से आओ, इधर से आओ, हर जगह पर एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही है. इतने रिंकल्स मैंने देखे थे, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. ये जो लाइंस की दुनिया थी ना, उनके पूरे चेहरे पर हर तरफ से हर तरफ जाती थी, और चेहरे का कोई कोना नहीं छोड़ा था इन लाइंस ने जहां पर ये रिंकल्स नजर न आए. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. अब लोग जो कहते थे वो लोगों की बातें. जब हम दादी की बात को मान लेते थे कि ये एक कहानी बता रही है, तो फिर हम लोगों की बात को कैसे मान सकते थे? हमें लगता था नहीं नहीं नहीं, नहीं, दादी ऐसी ही थी जैसे हमने देखा है. दादी कभी युवा नहीं थी, दादी कभी खूबसूरत नहीं थी, दादी की बॉडी कभी भी स्ट्रेट नहीं थी. ये तो ऐसी ही थी जैसी अभी दिख रही है, दूसरी कभी नहीं थी. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, मतलब बूढ़ी तो थी, इतनी ज्यादा बूढ़ी थी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि इससे ज्यादा बूढ़ी वो हो ही नहीं सकती थी. मतलब वो बुढ़ापे के पीक पर वो थी. इससे ज्यादा आदमी बूढ़ा नहीं होता, इससे ज्यादा आदमी ऊपर उठ लेता है. इतनी बूढ़ी दादी को मैंने देखा था, और आज 20 साल हो गए लगभग, हमारी दादी वैसे की वैसी है. लोग कहते हैं कि तुम्हारी दादी ऐसी थी, वैसी थी, वैसी थी. हमें क्या मालूम यार, हमें यकीन नहीं होता है तुम्हारी बातों पर. दादी की बात पर यकीन नहीं होता. जब कहती है हम भी बचपन में खेलते थे, वो खेलते थे, तो लगता था दादी का भी बचपन था. हाँ, हमारा बचपन है, हम तो देख रहे हैं भैया, हम तो छोटे से बड़े हुए, दादी का तुम नहीं देख पाया. दादी का बचपन तो हम नहीं देख पाए, तो हमें तो लगता था दादी ऐसे फेंक रही है, कहानी सुना रही है. तो
तो हम दादी की बात को कहानी मान लेते थे, तो बाकी लोगों का क्या मानेंगे, उनका तो और कहानी मान लेंगे। हम तो यही मानते थे कि दादी हमेशा से बूढ़ी थी और इतनी बूढ़ी थी कि उससे ज्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। Had stayed at the same age for 20 years, और ऐसा लगता था उनके लिए जैसे वक्त रुक गया है। ये हमारी चाइल्डहुड की समझ होती है। हम 20 साल में कहां से कहां आ जाते हैं। हम 20 साल पहले एक छोटे से नन्हे से बच्चे थे जिसको खुद खबर नहीं थी कि उसका कौन सा कपड़ा कहां पर है, खुद खबर नहीं होती थी कि किस जगह कैसी सिचुएशन में है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। 20 साल पहले हम ऐसे थे और 20 साल बाद हम ऐसे होते हैं कि हर बात का ख्याल रखते हैं। इतना परिवर्तन हमारे अंदर आ गया है। लेकिन हमें क्या लगता है कि दादी 20 साल पहले भी ऐसे थी और दादी 20 साल बाद भी ऐसे है। ऐसा लगता है जैसे एज, जैसे उम्र, जैसे वक्त दादी के लिए बस ठहर के रह गया है, रुक के रह गया है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। हमने दिमाग में बना लिया कि दादी कभी खूबसूरत हो ही नहीं सकती। दादी कभी खूबसूरत हो ही नहीं सकती है हमने सोच लिया। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। हां, लेकिन वो खूबसूरत हमेशा थी। अब दो बातें हो गई ना, प्रेटी और ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो उनके हार्ट की बात है, उनके सोच की बात है, आप उसको संस्कार कह सकते हैं, उनके स्पिरिट की बात है। तो उनका दिल, उनकी सोच, उनकी जो रूह थी वो हमेशा से खूबसूरत थी। उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्रेटी की बात चल रही है, उनकी जो बाहरी सुंदरता है, ब्यूटीफुल आंतरिक सुंदरता को दिखा रहा है और प्रेटी जो है बाहरी सुंदरता को। जो लोग प्रेटी उनको मानते हैं वो बात समझ से परे है। वो कभी लगता ही नहीं कि वो खूबसूरत रही भी होंगी बाहरी रूप से, लेकिन ब्यूटीफुल हमेशा थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस स्पॉटलेस white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखती थी। पहले के लोग जो बुजुर्ग होते थे बड़ा साफ सफाई का ध्यान रखते थे। हालांकि उनके साफ सफाई का जो नजरिया होता था वो धार्मिक होता था। बात साफ सफाई की मतलब है चाहे वो धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए। दोनों ही दृष्टिकोण से ये अच्छी बात है कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और दादी जो थी वो इस बात का पूरा ध्यान रखती थी। इसीलिए कहा शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस। पूरे हाउस में वो घूमती टहलती रहती थी, या आप कह सकते हैं कि उनकी जुबान गूंजती रहती थी। कैसे? इन अ स्पॉटलेस वाइट। स्पॉटलेस वाइट। अब यहां पर दो बातें समझ में आती हैं। शायद दादी बूढ़ी हो गई हैं, तो आप जानते हैं हमारी पुरानी परंपराओं में जब कोई विडोव्ड होती थी तो वो वाइट ड्रेस में होती थी, और बुजुर्ग हो जाने के बाद तो बाल भी सफेद हो जाते थे। उस जमाने में लोग डाई यूज करते नहीं थे, तो बाल भी सफेद, दादी का वस्त्र भी सफेद, और शायद दादी भी गोरी थी, तो पूरी तरह से वो व्हाइट दिखती थी। स्पॉटलेस व्हाइट था, मतलब कुछ ऐसा लगता ही नहीं था काला है या कोई दूसरे कलर में है। स्पॉटलेस व्हाइट। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। और चूंकि थोड़ी सी बॉडी उनकी झुक गई थी, इसलिए खुद को संभालने के लिए एक हाथ को तो अपने वेस्ट पर, अपने कमर पे रखे रहते थे। आप आमतौर पर बुजुर्गों को चलते हुए देखेंगे तो एक हाथ में, कई बार तो ज्यादा जब दिक्कत हो जाती है, एक हाथ में वो छड़ी लिए रहती हैं, डंडी लिए रहती हैं, और एक हाथ जो होती कमर पे ऐसे रखे हुए इस तरह से आदमी चलती है। दैट इज, अपने कमर पे एक हाथ को रखे हुए और द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में उन्होंने रोजरी, माला अपने हाथ में ली हुई है, ईश्वर का नाम बोलती हुई, जपती हुई, उसको लेके, मतलब दिन भर उनके हाथ में माला होती थी, रोजरी। हर सिल्वर लॉक्स
were scattered untidy over her pale puckered face. उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल ढीला ढाला हो गया था, हल्का पीला पड़ गया था। उनके जो लॉक थे, बाल की लटें थीं, लॉक इन्होंने बोला ना बाल के लटों के लिए, उनके जो लॉक होते थे उनके चेहरे पर इधर उधर अनटाइडी तरीके से बिखरी रहती थी। कोई ऐसा नहीं था कि वो बहुत ध्यान रखें कि बाल इधर गिर रहा उधर गिर रहा, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। And her lips constantly moved in inaudible prayer. और उनका लिप्स जो था ना, उनके होठ इनऑडिबल प्रेयर में, ऐसा प्रेयर जो हमें सुनाई नहीं देता था, वो बोलती हमेशा रहती थी, प्रेयर हमेशा कर रही होती थी, प्रार्थना हमेशा उनका ईश्वर से चल रहा है, टेलिंग बीट्स, बट वो क्या बोलती रहती थी ये ज्यादा सुनाई नहीं देता थी, इनऑडिबल। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। हाँ, जहां से मैं देखता हूं मेरी दादी खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वो अपने आप अगर आप देख सकते हैं तो जैसे माउंटेन्स के बीच में घिरा हुआ लैंडस्केप होता है, समतल जमीन होता है, उस तरह से वो खूबसूरत थी। आप कभी ध्यान दो, समझने की कोशिश करना। चारों तरफ पहाड़ थे, पर्वत, बीच में समतल मैदान हो, हरे भरे घास, हल्की फुल्की बर्फ की फुहारें, क्या खूबसूरती वो नजर आती है। उस खूबसूरती में आपको आकर्षण नहीं, उस खूबसूरती में आपको दिव्यता नजर आती है। मेरी दादी मेरे लिए दिव्य रूप थी। उसकी जो खूबसूरती थी वो भव्यता की खूबसूरती नहीं थी, दिव्यता की खूबसूरती थी। तो जैसे माउंटेन से घिरे हुए लैंडस्केप में जो खूबसूरती होती है, उसी खूबसूरती को मैंने अपनी दादी में देखा है, इसलिए मेरी नजर से मेरी दादी खूबसूरत है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि मेरी दादी अपनी लाइफ में प्योर सेरेनिटी, पवित्र शुद्धता, शांति, सुकून को एक्सपेंस करके रखिए, फैला करके रखिए। ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट, और हर वक्त हर पल उसकी जुबान से ब्रीथ, जब वो सांस लेती है तो पीस नजर आता है, सुकून नजर आता है, कॉन्टेंटमेंट नजर आता है, वो संतुष्टि नजर आती है। मतलब उसको देखने के बाद ऐसा कभी लगता ही नहीं कि जिंदगी में बहुत भाग दौड़ है। मेरी दादी की खूबसूरती की लोग चर्चा करते हैं, एक ऐसी खूबसूरती जिसको हमने कभी विटनेस ही नहीं किया, जिसको कभी हमने देखा ही नहीं, तो इसलिए हम मानते भी नहीं कि वो सच में उस तरह की खूबसूरत थी। लेकिन एक खूबसूरती हमने उनमें देखा है, और वो खूबसूरती कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने कंपेयर किया है, मेटाफोरिकली आपसे बात किया है, मेटाफर का यूज करते हुए कहा कि मेरी दादी अपने आप में माउंटेन्स के बीच में दिखने वाले खूबसूरत लैंडस्केप की तरह है, जिसको देख करके हमारे मन में भव्यता तो नहीं आती है लेकिन दिव्यता आती है। ऐसे नज़ारों को देखकर, हरियाली से भरे हुए नज़ारों को देखकर एक सुकून फील होता है, एक आराम हमें महसूस होता है। उस आराम को, सुकून को दिखाने वाली हमारी दादी है, जिसमें हम लोग ऐसी भागदौड़ तो नहीं देख सकते जैसे हमारी जिंदगी में है, लेकिन उसकी हर बात में, उसके हर काम में एक पीस नजर आता है, एक कॉन्टेंटमेंट नजर आता है, एक संतुष्टि नजर आती है, जिसकी तलाश लगभग हर किसी को है। इस जिंदगी का एक मकसद होता है, जिंदगी का एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य है कॉन्टेंटमेंट एंड पीस। और आप तो जानते हैं ये पीस बिना कॉन्टेंटमेंट के नहीं आ सकती। जिसके अंदर संतुष्टि होगी उसी को सुकून मिलता है। दादी संतुष्ट थी अपनी दुनिया में, उसको कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं थी। उसकी ख्वाहिश एक मैं था, उसकी ख्वाहिश उसका अपना घर बार था, उसकी ख्वाहिश अपना ये रोज का माला जपना था,
उसकी ख्वाहिश अपने ईश्वर को हमेशा याद करना था, हर वक्त वो याद करती रहती थी और उसकी याद में उसका सुकून, उसका आराम रिफ्लेक्ट करता था। तो दादी को हमने कभी प्रेटी तो नहीं देखा, लेकिन 20 साल से हम दादी को देख रहे हैं और दादी वैसे ही खूबसूरत है, वैसे ही ब्यूटीफुल है जैसे हमारे लिए वो बचपन में हुआ करती थी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कंटिन्यू रहेंगे क्लास के साथ डेली इन द मॉर्निंग बिटवीन 7 to 8। आप लोग इस टाइम में हमें लाइव देख सकते हैं हमारे ग्रुप पर भी, टेलीग्राम पर, और आप वैसे भी यूट्यूब पर हमारे क्लासेस पा सकते हैं जहां पर हम पीजीटी केवीएस के संपूर्ण क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू वेरी मच।